The topic of discussion is thermochemistry, and the subtopics are state function, internal energy, and units of thermal energy. The next concept is that of state function, and state function is stated as a macroscopic property of a system which has some definite values for initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about a change. स्टेट फंक्शन वो कभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी डेफिनेटिव इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हो जस्ट लाइक वॉल्यूम वी हैव v1 एंड v2 एंड इट डजेंट मैटर कि हमने वो जो चेंज लाए हैं वो किस मेथड के जरिए लाए हैं आइदर हमने प्रेशर कम किया है या हमने हीट सप्लाई की है सो स्टेट फंक्शंस आर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी और हम स्टेट फंक्शन को हमेशा कैपिटल लेटर्स के जरिए डिनोट करते हैं. Here is an example. Suppose V1 is the initial volume of a gas. Change is brought about in gas and final volume becomes V2. So delta V would be V2 minus V1. This change in volume of a gas can be brought about either by changing temperature or pressure. We have a certain volume of a gas जिसको हमने V1 से डिनोट किया. अब हमने उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना है. वॉल्यूम को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या आप प्रेशर कम कर दो. तो दोनों तरीकों से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. स्टेट फंक्शन बेसिकली ये कहता है कि उसकी वैल्यूज डेफिनेट होनी चाहिए जो कि हमने देखी है V1 और V2. बट इट डजेंट मैटर कि हम वॉल्यूम इंक्रीज किस मेथड से कर रहे हैं, आइदर हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं या हम उसका प्रेशर कम कर रहे हैं. सो सिंस V इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, so delta V will be independent of the way the volume of the gas has been changed. It will only depend upon the initial and final volumes of the gas. Let's introduce with the concept of internal energy. It is defined as the sum of kinetic as well as potential energies of the particles contained in the system. The kinetic energy is due to the translational, rotational, and vibrational movements of the particles, while potential energy accounts for all the types of attractive forces present in the system, including all types of bonds and van der Waals forces. एक सिस्टम में मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई. सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी हो सकती है, रोटेशनल की वजह से भी हो सकती है और वाइब्रेशनल मूवमेंट्स की वजह से भी हो सकती है. जबकि पोटेंशियल एनर्जी में दो टाइप की फोर्सेस आ जाती हैं. एक बॉन्ड्स आ जाती हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, जबकि van der Waals फोर्सेस जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, डायपोल फोर्स आती है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आ जाती हैं और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आती हैं. So the total of all possible kinds of energies of the system is called its internal energy. उस सिस्टम में मौजूद जितनी भी energies की types हैं उन सब का sum जो है वो internal energy के equal होता है. So the change is internal energy of the system delta E is a state function. अब हम एनर्जी में चेंज हीट के जरिए ला रहे हैं, किसी और मेथड के जरिए ला रहे हैं, वो उस पर डिपेंड नहीं करता. हमें सिर्फ उसकी डेफिनेट वैल्यूज चाहिए होती हैं विच वुड बी आइदर E1, E2 और E3. Let's see what are the units of thermal energy. First unit is joule. It is the SI unit of measuring heat. 1 joule is equals to 1 Newton into meters or 1 kilogram dot meter square per second square. ठीक है. Second unit is calorie. Calorie is basically the heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. And 1 calorie equals to 4.18 joules. This is a very important MCQ. As such पूछा जाता है 1 calorie equals to 4.18 joules. Let's discuss a practice MCQ.
calorie is equivalent to 0.4148 joules, 40.18 joules, 4.184 joules, 418.4 joules, and the correct option is 4.184 joules. Here we have another concept of specific heat capacity. Let's discuss it. The heat Q that must be supplied or removed to change the temperature of a substance of mass m by an amount delta T is Q is equal to mc delta T, where C is the specific heat capacity of a substance, and it is defined as the amount of heat required to raise 1 kilogram by 1 degree Celsius. 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है डेट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक की वजह से वी आर यूजिंग 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस. Let's discuss a question. Total heat energy is calculated in a bomb calorimeter by following formula: m into s, c into delta t, s into delta t, c into s into delta t, and the correct option is c into delta t. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well, and thank you so much.